lovely people. Good evening. And as promised, we are back with the Wednesday book review with our guest reviewer, Miss Seema Virani Kholiya. And let me introduce her to you. Miss Seema is a writer, a blogger, a vivacious reader, and a language expert. So, ma'am, welcome to the show today. And can you please tell us what is there in store for us? Yes. First of all, thank you so much for having me here again. It's an honor to be here once again, reviewing the most favorite book once again from my childhood trunk. Thank you, Small Wonders, Parent Station, and Harsha ma'am and Mona ma'am, for this is an amazing opportunity to directly come in contact with the kids and their guardians, their parents. So today we are going to, I'm going to talk about, I don't much use the word review. When you say review, it comes, you place yourself into a authority. Whereas when the book which I'm talking about, the Anne Frank, The Diary of a Young Girl, is a book where nobody can place themselves in a place of authority, cannot have a sense of authority for that book. It's that master book. Few things about the book. Initially starting, what is the book all about? Few technical things about the book, that this book has been translated in more than 60 languages around the world. 60 It has, languages. yes, till now, since the World War II, it was published after the World War II immediately. It has almost 30 million copies have been published till date. Wow, So, that's really amazing. yes, and it is the most widely read book after Bible. So you can say it Oh, is the second most widely read book across the globe. So, okay, so the title of the book, that is The Diary of a Young Girl by Anne yes, Frank. So if yes, I'm not wrong and if I go back to my school days, ma'am, I have learned or I've read the extracts from this book in our English textbooks. So I think the yes, yes. extracts from this book are published in the textbooks also. Yes, yes, across the world, in Oh, English curriculum, in the middle schools and in the high schools, randomly, okay. I mean, either in 10th standard or in 7th standard or in 11th standard, at least there is one chapter which belongs to the diary. It has been published. Because technically, if we talk, this isn't a book or this isn't a story book. This is a diary entry, more of a diary. Like we say journal, it is more of a diary entry by a very young girl, by say a girl of 13 year, So, Anne Frank. so, can you just tell us something more about the content actually of Yeah, this book, or about the yes, girl who is writing this book, ma'am? We like what is so amazing yeah, that it is the second most read book in the world. yes. The most amazing thing about is everything about the book is amazing. Amazing in a sad sense. Um, this book was written by a 13, it has started to be written by a girl when she was 13, Anne Frank. She was a Dutch Jewish girl living in Germany and then settled in Netherlands, Amsterdam. So you can say her name, if we pronounce in her language, it is Anna Maria Frank. So she was a Oh, 13-year-old girl, a very extrovert, clever, loving, full of life girl. She lived in the period of Second World War. So this was the reason I told you to conduct two episodes of the book, because initially I really wanted to give my listeners, especially the kids, to have a little view about what was the World War II all about. Who were Nazis? What was Germany at that time? Who was Adolf Hitler? And who is Anna Maria Frank? Anne Frank. So
as I said, she was a girl of 13 years. Uh, it was on her birthday, when she was 13th birthday, on 12th of June, 1942, when her parents gifted her this book. It was a diary, a simple Right. diary, or Yeah. you or me can gift to our children. It was a beautiful red colored diary. And Okay. as this girl was a little ahead of her times, a little more clever, a little more emotionally intelligent girl, she didn't have much of friends. As she says in her diary, that she had lots of admirers, lots of girlfriends, but she didn't have a true friend to whom she can confide, जिसको जाके वो अपने दिल की feelings, अपने teenage बातें बता सके. Okay. She could not share things with a friend. She did not Yes, able to the share. way she could, the way one can share with a best friend. She didn't Yeah. feel that confident. She could not confide into a friend. So, Okay. the moment her parents gave her this book, she named her. She named this book as Kitty. And Oh, every day she's, yes, this name, she, and every day whenever she started writing, she used to start it with Dear Kitty, Dearest Kitty, and used to open her heart, used to let the things flow out of her heart on the diary. And this so was she the way personified. She personified the diary actually. he personified the diary. Yes, उसके Okay. ये जो डायरी थी उसकी बेस्ट फ्रेंड थी. और That's ये nice. बात है 1942 की, जब वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था. और ये लोग Oh. जो एन के पेरेंट्स थे और बहन, ऑटो फ्रैंक एनी के पापा, एडिथ फ्रैंक एनी की मम्मी, और मार्गो एनी की बड़ी बहन, वो लोग एनी के साथ एम्स्टरडेम में रहने आ गए, नेदरलैंड्स में. अभी दैट वाज द Okay. टाइम जब जर्मनी, हिटलर जर्मनी में अपना पावर रीगेन कर रहा था. और जो यूरोप Oh. के दूसरे पार्ट्स थे, जैसे पोलैंड, राइनलैंड, ऑस्ट्रिया, जेकोस्लोवाकिया, वहां पे ही वाज गेनिंग कंट्रोल. तो उसको एक हम लोग एक नाम से बुलाते हैं, यूरोप ऑक्यूपाइड, जर्मनी ऑक्यूपाइड यूरोप. Oh. Okay. तो अभी वो नेदरलैंड्स में भी उसकी जो नाजी रजीम थी, उसकी जो आर्मी थी, वो बढ़ रही थी. और हिटलर को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी जूस से, यहूदियों से. Okay. तो अब वो कैसे भी करके अपने मॉरल्स को, अपनी सोच को, ह्यूमन सोच को असाइड रख के, वो जूस को ढूंढ ढूंढ के उनको गेटोज में डाल रहा था. मतलब उनके लिए स्पेशल कॉलोनीज बनवाई थी उसने, जहाँ पे ये पैसे वाले, गरीब, मिडिल क्लास सारे जूस को इकट्ठा करके, जैसे नेदरलैंड्स में, एम्स्टरडेम में से, पोलैंड में से, राइनलैंड में से, सब में, और वो गेटोज में रख रहा था शहर के बाहर. और जैसे Okay. दूसरा गैंग ऑफ जूस को लेके आता था, दूसरे ग्रुप ऑफ जूस को, तो इन जूस को या तो वो मार गिराता था, या तो फिर कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में ले जाता था. Oh. They had to live in a terrible situation. बहुत इट खराब वाज सिनेरियो होगा तब तो. इट वाज टेरर पर्सोनिफाइड. बहुत ही इनह्यूमन कंडीशन में वो जूस रहते थे. और Okay. खाना नहीं मिलता था उन्हें, पानी बहुत गंदा या फिर इनहाइजीनिक पीना पड़ता था. ठंड बहुत थी. वो जर्मनी के वो सारे पार्ट्स में, यूरोप में अभी भी टेम्परेचर्स बहुत लो रहते हैं. Yes. Yes. तो क्या होता था कि एक बार एन की बड़ी बहन को कंसंट्रेशन कैंप में काम करने के लिए लेटर आता है जर्मनी की गवर्नमेंट तरफ से. तो ये लोग सोचते हैं, एन और उसकी फैमिली, की अभी ऐसे खुलेआम जू बन के रहना सेफ नहीं है. तो वो लोग एक सीक्रेट हाइडिंग प्लेस में चले जाते हैं. उसको बोलते The हैं full family. अनेक्स. द फुल Oh. फैमिली विद द Oh. अदर जूस. वो लोग एक सीक्रेट हाइडिंग, 2 रूम के, एक लाइब्रेरी के पीछे 2 रूम, बिल्कुल नॉन वेंटिलेटेड, जहाँ पे हवा भी नहीं आ सकती, वैसे 2 कमरों में 11 लोग रहते हैं.
एक था Okay. ऑटो फ्रैंक का फैमिली, एन फ्रैंक का फैमिली, जो 5 लोग, सॉरी 4 लोग हैं, और एक है उनके दोस्त, उसके पापा के दोस्त, वैन पेल्स, जो पीटर वैन Okay. पेल, हरमन वैन पेल और ऑगस्ट वैन पेल, इसके एन के पापा के दोस्त हैं। और एक डॉक्टर है जो जू है, वो भी डॉक्टर फेफर, जो इनके साथ रहते हैं। तो लोग एक सीक्रेट एनेक्स में 3 साल के लिए रहते हैं, 1942 1943 से 1945 3 years. तक। यस, Oh, ऑलमोस्ट 3 a इयर्स। long time. यस। So here is where she started writing. No, she had started writing initially while she was living freely. She had Okay. started writing, but तब तक World War II की जो हाँ. सेंस थी, जो फॉरबॉर्डिंग सेंस थी, जो एक पता था कि कुछ गलत, ज्यादा गलत होने वाला है, वो इन लोगों को सबको पता था, क्योंकि वहां से जर्मनी से न्यूज आ रहे थे कि यहूदियों के साथ, जूस के साथ कितना बुरा सलूक किया जा रहा है। तो वो Okay. लोग वो लोगों को पता था। तो ऑटो फ्रैंक ने, एन फ्रैंक के डैड ने एक ऐसी अरेंजमेंट कर रखी थी, वो लोग हाइडिंग प्लेस में चले जाते हैं जहां पे एन हम्म. अपनी राइटिंग को ज्यादा और ज्यादा लिखती रहती है, क्योंकि वहां पे ऐसे है कि अगर एन एन को सर्दी हो गई है तो वो खांसी नहीं खा सकती। तो Oh. उसकी मम्मी उसको कोल्ड कफ और कोल्ड डिकंजेस्टेंट की पूरी बॉटल पिला देती थी, ताकि उसको खांसी ना हो, उसकी आवाज बाहर ना जाए। यस। ऐसी बहुत ही इनह्यूमन कंडीशन में ये लोग रहते हैं। जर्मनी में बहुत बुरा हाल है, जर्मन ऑक्यूपाइड यूरोप में बुरा हाल है। वर्ल्ड 2 हिस्सों में बटा हुआ था तब, अलाइज और एक्सेस। अलाइज में थे जैसे यूएस, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, ये लोग थे, और इस तरफ थे जर्मनी, एक्सेस में थे जर्मनी, इटली और जापान, जो पूरी दुनिया को तहस नहस कर रहे थे। वर्ल्ड वॉर वॉर के लिए ऐसे कहा जाता है, World War II और World War I के लिए, कि ये it is the bloodiest battles humankind has ever witnessed. Okay. That तो is इन horrible. यस, इस कंडीशन में एन अपनी किताब के सहारे, उसे कोई परवाह नहीं बाहर क्या हो रहा है, बस उसे फ्रीडम की सांस लेनी है, उसे अपनी टीनेज एंजॉय करनी है, उसे राइटर बनना है, उसे बहुत सारा नॉलेज गेन करना है। और इस So a दरमियान, girl, sorry to interrupt, a girl with नो नो, dreams, and she is just closed in that small dungeon, or what you say, that secret यस, place. सीक्रेट प्लेस, Okay. यस। So what एंड what actually exactly are the contents of her writing in the book? she is writing every day, she writes every day, she confides into it while she's वो जहाँ पे रहती है सीक्रेट हाइडिंग में। तो जैसे टिपिकल टीनेजर को मम्मी पापा से प्रॉब्लम्स होते हैं, मॉम डैड से, वैसे वो रिबेलियस है तो उसको भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। वो अपनी मम्मी से झगड़ा कर रही है, क्योंकि वो टिपिकल टीनेजर है जिसको बहुत कुछ करना है, बहुत आगे बढ़ना है, नॉलेज हासिल करना है। उस दरमियान उसको जो साथ में रह रहा है, पीटर वैन पेल्स, उसको उसके साथ रोमांटिक रिलेशनशिप हो जाता है, और वो भी वो डायरी Okay. में लिखती है, बिकॉज शी इज अ टीनेजर। सो शी कम्स इनटू Yeah. अ रोमांटिक रिलेशनशिप विद पीटर। She wants to live life with Peter. She wants to go out and breathe what is freedom. She wants to have that sunshine. और वो सारा कुछ ये बुक में लिख रही है। ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, जैसे नाजी रजीम आगे बढ़ रही थी, Uh, क्योंकि क्योंकि एन जू थी। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि हाउ कैन वी, हाउ इनक्रेडिबली डिस्गस्टिंग कि हम किसी को बुरा भला कम ज्यादा मानते हैं, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर रेस से बिलोंग करते हैं, जैसे जू है। it is. यस। तो ये जो वैल्यूज हैं, कंपैशन है, एम्पैथी है, ये मुझे लगता है ये किताब पढ़ने से पेरेंट्स के साथ रह के बच्चों को एक वैल्यू सिस्टम बिल्ड होगा बच्चों में, कि जस्ट बिकॉज कोई एक रेस को बिलोंग करता है, वी एज एज ह्यूमन बीइंग्स हैव नो राइट टू जज देम ऑन अ Judge पर्टिकुलर। others. Yes. यस।
सो ये लड़की ऐसे रह रही है अंदर उसकी बहन माँ बाप के साथ। बाहर का तो सीन ही कुछ अलग है। जूस को कंसंट्रेशन कैंप Okay. बनाया है ये हिटलर ने। पूरे यूरोप में 6 कंसंट्रेशन कैंप्स बनाए थे, जिसमें से सबसे इनफेमस थे सोबोरिक, ऑट्सविट्स, बर्गन बेल्जन। ये जो Okay. कंसंट्रेशन कैंप्स थे वहां पे जो अनफिट है, जो औरतें हैं, जो बच्चे हैं, उनको हिटलर पूरी ट्रेन्स भर भर के वहां बेचता था। उनको एक चैम्बर्स, गैस चैम्बर्स में बंद किया जाता था। उनके बाल शेव किए जाते थे और गैस उन पे छोड़ा जाता था, पॉइजनस गैस। This was the mass murder a genocide history has ever witnessed. Oh, सो हुए हैं जीनोसाइड्स, हुए हैं हिस्ट्री में, लेकिन हिटलर को पता था, वो स्ट्रैटेजिकली जूस को एलिमिनेट कर रहा था। वो बोलता था that कि was his aim. In fact, he wanted to finish off the Jews. यस यस, वेरी मच, ही वाज वेरी क्लियर। वो स्ट्रैटेजिकली कर रहा था क्योंकि वो मानता था कि वो एक आर्यन है और वो मास्टर रेस है उसकी। तो अगर जूस जिंदा बचे, अगर जूस ने मिक्स किया उसकी रेस के साथ, तो वो लोग इम्प्योर हो जाएंगे। वो जूस को रेट्स बुलाता था, वो जूस को इम्प्योर बोलता था। इस कंडीशंस में एन फ्रैंक, ऑटो फ्रैंक और उसकी फैमिली ने 3 साल तक हाइडिंग प्लेस में 2.5 साल तक सरवाइव किया। और आगे मैं बताऊंगी एन फ्रैंक वहां पे कैसे रहती थी उसके पेरेंट्स के साथ, उसके डायनामिक्स, उसकी फैमिली के साथ, दूसरे फैमिली के साथ। उससे पहले मुझे एक छोटा सा एक्सपर्ट पढ़ना है, जैसे वो कैसे लिखती थी, हाउ शी यूज टू राइट। Oh, we would really like to hear that. Yes, Thank yes. This is the book I was talking about, Anne Frank. The you. story Okay. of a young girl, the diary of a young girl. She Diary of has a young girl. been, this is the face known across the globe for the Yes, teenage courage. Yes. she is So this, courageous, I should say. yes, yes. This is on Saturday, the 12th of February, 1944. Dear Kitty, she says, the sun is shining, the sky is deep blue, there is a lovely breeze, and I am longing, so longing for everything. To talk, for freedom, for friends, to be alone with my friends. And I do so long that I cry afterwards. I feel as if I am going to burst, and I know that it would get better if I cry. But I can't, because after crying, I become restless. I go from one room to another, breathe through the cracks of closed windows, feel my heart beating as if it is saying, can't you satisfy my longings at last? I believe that it is spring within me. She's saying, I believe कि मेरे अंदर spring है. I So feel that it is spring is, moving by emotions. yes, I She's feel full that of spring is, emotions, like yes, emotions from 13-year-old girl, 14-year-old yeah, girl. and they are so strong. In fact, just reading some lines, a person can Yeah, get connected to what she's feeling. yes, yes. I believe that there is spring within me. I feel that spring is awakening. I feel it in my whole body and my soul. It is an effort to behave normally. I feel utterly confused, don't know what to read, what to write, what to do. I only know that I am longing for freedom. Oh. So we can just connect to the emotions, the mental condition of that girl. She Yes, is in a very bad situation, and like we as Indians also have been in such situations yes, earlier. yes, 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 So it is something where I think we can connect to. Plus, that yes. for teenagers, this is a must read, I say. This is a must read. And, reading such kind of diary entries, someone who is written by
whole her heart, not knowing, एन को बिल्कुल पता नहीं था कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उसकी बुक पब्लिश होगी और इतनी फेमस होगी। उसको पता नहीं था, उसके इंटेंशंस ऐसे नहीं थे। एक बार बीबीसी रेडियो पे जब वॉर वॉर खत्म होने वाला था, तब शायद विंस्टन चर्चिल ने आई बिलीव अनाउंस किया था, और डच के एक प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया था जो लंदन में एग्जाइल में रह रहे थे, कि जिसके पास डॉक्यूमेंटेड है अपने वहाँ जर्मनी के सारे प्रॉब्लम्स जो फेस करे हैं उन लोगों ने, हिटलर के रूल में, नाजी के रूल में, हॉलोकास्ट देखे हैं, जिन्होंने हॉलोकास्ट सर्वाइव किया है, उनके डॉक्यूमेंट्स को वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद पब्लिश किया जाएगा, ये दुनिया को बताने के लिए कि जर्मनी और ज्यूज ने कितना फेस किया है, लोगों ने कितना फेस किया है। तो एन ने थोड़े रेक्टिफिकेशंस किए थे, बट मैं कमिंग एपिसोड में बताऊंगी कि एन के साथ क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 का एंड क्या था, उसकी फैमिली के साथ क्या हुआ, और आखिर में ये बुक कैसे पब्लिश हुई। Okay, तो so for that we have to wait for the second episode. yes, yes, So yes, eager for next Wednesday. yes. So We'll thank catch up you, on next Wednesday. Uh, Pakka. whoso I request all the listeners once again. This is the must-have book in your children and your library as well. This is one that will build a value system in your kids and your life as well. Thank you so much, ma'am, to Thank for you. talking to our audience, for telling them Yes. about this book. And here, I would also take this opportunity to thank Small Wonders and Parent Station for giving us this lovely platform. And with a promise to meet you all next Wednesday, here is Mona Bhatt signing off with Miss Seema Virani Kholiya. Bye Thank you so bye. much. Yes. Stay safe. Bye. 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 Stay safe. Yes.